Okay, let's start now. Today we are going to discuss electrostatics of conductors. The next topic of electrostatics is electrostatics of conductors. So let's try to understand what we mean by electrostatics of conductors. First point, in electrostatics equilibrium, net electric field inside a conductor is zero. First point, inside a conductor net electric field is always zero. कोई भी अगर कंडक्टर है और वो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन्स the charge is not moving or flowing on the conductor, it is at rest, then it is called electrostatics equilibrium, and inside the conductor net electric field is zero. How can we explain it? Try to understand. Suppose we have two charged conductors, or called the charged plates, and as we know there are parallel electric field lines. This is first plate positively charged, this is second plate positively charged, suppose plus Q and suppose minus Q, and as we know electric field is from positive charge to negative charge. We have read in the case of Gauss theorem there are two plates, oppositely charged plates of equal surface charge density, then electric field is sigma upon epsilon naught. Okay, what will we do? Let's have a conductor and this conductor is kept inside it. When this conductor is kept in the space between them, then what will happen? Due to induction, minus Q charge will appear on this side and plus Q charge will appear on that side. Due to this positive, the negative charge will appear on this. All the free electrons will move toward this end and leaving the positive charge on the opposite side. So inside it, conductor and polarizing electric field will be developed. And this electric field will be equal to this applied electric field, so that the effective electric field inside the conductor will become zero. The applied electric field is from positive to negative, from left to right, and the induced electric field from positive to negative inside the conductor. So the net electric field in the conductor will be zero. First point. Second point, always electric field is perpendicular to the surface of the conductor. Another important point, we are taking that what will be the direction of electric field on a charged conductor, that is always perpendicular to the surface of the conductor. We can also prove that. Let's see how we'll prove it. देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे. Suppose there is a conductor and there is a charge, this is charge plus Q somewhere, and it is of asymmetric structure, then we say electric field must be perpendicular to the surface. How can we prove it? Let's understand. Let's assume rather the electric field in this direction. मान लीजिए electric field perpendicular नहीं इस direction में है. इसके दो component लीजिए. बताइए what will be the horizontal component? E cos theta. E cos theta is the component of electric field if it is making angle theta along the horizontal direction. And as we all know, due to electric field, any charge experiences a force, and when there is a force on this charge on the surface of the conductor, as a result of this E cos theta, the horizontal component of electric field, the charge starts flowing on the surface of the conductor, and electrostatic equilibrium will not be maintained. It means the horizontal component of the electric field must be zero, that is E cos theta is equal to 0. And since electric field is not 0, why? Because there is a charge. If charge is there, then electric field is also there. It means E is not 0, so cos theta is equal to 0 or theta is equal to 90 degree. It means that the electric field is always perpendicular or normal to the surface of the conductor. It is the second point. Third point. Come to third point. I think सबको क्लियर हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? चार्ज कंडक्टर कोई भी है उस पे कैसा होता है? नॉर्मल टू द सरफेस. पहला पॉइंट क्या था? किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है. थर्ड पॉइंट, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो.
नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होता है। कैसे जीरो होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ आपने बताया चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों होगा चार्ज जीरो? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अप्लाई गॉस थ्योरम। व्हाट इज गॉस थ्योरम? E dot ds is equal to q upon epsilon naught. And since inside this conductor electric field is zero, if electric field E is zero, then q will also be zero. So inside a conductor the net charge should be zero, right? Next point. The electric potential throughout the conductor remains constant. That is V is equal to constant. Another point, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, दैट इज ऑन द सरफेस और इनसाइड द कंडक्टर. हाउ कैन वी प्रूव इट? वी नो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. And we know this relation, V is the potential and E is the electric field. Okay, and since E is 0, so dV upon dr is equal to 0 or V is equal to constant. So if electric field is 0, then electric potential will remain constant. This is another point. तो electric field 0 होता है कंडक्टर के अंदर, लेकिन throughout the volume of the conductor electric potential remains constant. One more point. The electric field outside the conductor, the electric field just outside the conductor is sigma upon epsilon, just outside. We can also prove that. हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं. just outside कंडक्टर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है बच्चों, that is sigma upon epsilon naught. देखिए कैसे प्रूव करेंगे. Suppose there is a conductor, let us assume any conductor, and suppose this is a Gaussian surface of almost negligible length. One part inside the conductor, another part outside the conductor, and since we know inside the conductor electric field is 0, and if it is positively charged, then electric field outside the conductor will be in the outward direction and its area will also be in the outward direction. चलिए गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए. फिर कितना आएगा गॉस थ्योरम में? इंटीग्रल E dot ds is equal to q upon epsilon naught. E dot ds, E and ds both are in the same direction. Suppose it is E ds, if we are taking the small element, then it is equal to q is sigma ds upon epsilon naught and ds will cancel out. So E is equal to sigma upon epsilon naught, and in vector form sigma upon epsilon naught n cap. What is n cap? It is outward, perpendicular to the surface of the conductor. If it is the positive charge, then it will go away. If it is negative charge, then it will be towards. Okay, so this is another point. So just outside the conductor, the electric field will be sigma upon epsilon naught. ये सारे important points हैं. इन सबको हम कहीं आगे यूज करेंगे. सब ये कॉन्सेप्ट बनते चले जाएंगे. तो कितने पॉइंट्स हो गए? 5 पॉइंट. देयर इज वन मोर पॉइंट, दैट इज लास्ट पॉइंट. एक पॉइंट और हम ले रहे हैं इसमें, लास्ट पॉइंट. For an irregular shape conductor, if any conductor is irregular shape, just like this conductor is, so there are different charges at different places, so the density will be different at different parts of the conductor. It is sigma 3, it may be sigma 4. So of the conductor of any irregular shape, the surface charge density will be different at different parts of the conductor. However, for the symmetric structure, just like a sphere is there, it remains same throughout. So these are few points regarding the electrostatics of a conductor. Come to next. This one small point is there, which is called electrostatic shielding. जिसको हम कई बार स्क्रीनिंग भी कहते हैं. Electrostatic shielding or screening. What we mean by electrostatic shielding or screening? Try to understand it. It is the phenomenon of protecting certain region of space from external electric effects. कोई भी एक स्पेस है, कोई रीजन है, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इफेक्ट से. इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं.
As we have read that inside a conductor, the net electric field is zero, and to protect delicate instruments, we enclose them by hollow conductors. क्या होगा ऐसे करने से? And these hollow conductors are also called Faraday's cages. Faraday cages हैं. Faraday cages का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसा कंडक्टर है, होलो कंडक्टर है, अगर उसके अंदर किसी दूसरे डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को रख दिया जाए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, और ये जो होलो कंडक्टर्स है ये उसको इलेक्ट्रोस्टैटिकली शील्डिंग प्रोवाइड करेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फैराडे केजेस. अच्छा एग्जांपल लेकर बताते हैं. एग्जांपल ये समझ आया सब बच्चों को? इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर नहीं है तो एक बार फिर बता देते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है? इट इज द फिनोमिनन of protecting certain region of space from external electric effects. इसको हम कहते हैं, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रीनिंग भी कहते हैं, और हम उनको होलो कंडक्टर्स के अंदर एनक्लोज कर देते हैं, और उसके वजह से क्या हो जाता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड हो जाता है. फॉर एग्जांपल, it is safer generally during thunderstorm accompanied by lightning, it is safer to sit inside a car or bus rather than under a tree or in the open sky. जब बहुत लाइटनिंग होती है और जब थंडरस्टॉर्म आता है, ऐसे केस में जब बादल गरज रहे होते हैं, ऊपर से आकाश से बिजली गिर रही होती है, ऐसे केस में किसी पेड़ के नीचे सेफ नहीं है, ओपन स्काई में भी सेफ नहीं है. हाँ, अगर किसी कार के अंदर बैठ जाते हैं, किसी बस के अंदर बैठ जाते हैं, तो वहां पर हम सेफ हैं. ऐसा क्यों है? द रूफ ऑफ द कार और द रूफ ऑफ द बस विच इज मेड बाय द मेटल विल प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. So we can protect ourselves. क्यों प्रोटेक्ट कर सकते हैं? किस वजह से? By applying the concept of which Faraday cages. बात समझ आ गई? तो कहां पर? To protect ourselves during thunderstorm accompanied by lightning, we are safer inside a car, inside a bus, rather than in the open sky or under a tree, because the roof of the car or the bus always provide इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. वो ऊपर से एक होलो कंडक्टर का काम करते हैं, उसके अंदर हम सेफ रहते हैं. इस फिनोमेनन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग और स्क्रीनिंग. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. कम टू नेक्स्ट टॉपिक इज, yes, we take another topic now, and that is electrical capacitance. Capacitance of a conductor. What does it mean? New topic we are going to start. Electrical capacitance. Capacitance means capacity or ability. Electrical, to hold the electric charge by a conductor. So what is electrical capacitance? It is the capacity or ability of a conductor to hold charge on it. As we know, every conductor has a definite capacity to hold charge on it. It has ability, a certain amount of charge can be holded or can be stored on the conductor, and this is measured in terms of capacity or ability. कोई भी कंडक्टर है, उसकी एक डेफिनेट कैपेसिटी है, एक डेफिनेट एबिलिटी है चार्ज को होल्ड करने की, स्टोर करने की, एंड दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. Q upon charge. When charge is given to a conductor, then increases its potential. It means that if a charge is given to a conductor, charge given to a conductor, it rises its potential.
तो जो हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं वो उसके पोटेंशियल को राइज कर देता है, इंक्रीज कर देता है. सो वी कैन से एक्सपेरिमेंटली Q is directly proportional to V, where the Q is the charge given, V is the potential. Or to remove the proportionality sign, it is called Q is equal to CV, and this is called capacitance of the conductor. It is electrical capacitance of the conductor, and from this equation we can define this capacitance C is equal to Q by V. So it is the ratio of charge given to the potential of the conductor, potential rise of the conductor. तो कैपेसिटेंस की दो डेफिनेशन हो गई. ये तो कैपेसिटी है, चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी है, कैपेसिटी से कैपेसिटेंस कहते हैं. कॉन्सेप्ट तो ये हो गया. इसको मेजर कैसे करते हैं मैथमेटिकली? व्हेन चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल राइजेस. So Q is proportional to V, so Q is equal to CV. C is called capacitance of the conductor. It's the proportionality constant, which can be defined as the ratio of the charge given to its potential rise. And it is measured in terms of unit, that is coulomb per volt. This is SI unit, and which is called farad. इसको हम farad कहते हैं. The symbol is capital F. And if Q is equal to 1 coulomb and V is equal to 1 volt, then what about C? That is equal to 1 farad. So what is 1 farad? Capacitance. It is the capacitance of a conductor. Which conductor? To which 1 coulomb charge increases its potential by 1 volt. So if we give a charge of 1 coulomb to a conductor which raises its potential by 1 volt, then its capacitance will be 1 farad, and it is a scalar quantity. Is it clear to everybody? कंडक्टर की कैपेसिटेंस समझ आ गई क्या होता है? चलिए इसका एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं. Let's try to take an example of a spherical conductor. Spherical conductor. एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डेराइव करते हैं. बताइए पोटेंशियल कितना होता है स्फेरिकल कंडक्टर में? इट इज अ स्फेरिकल कंडक्टर. सपोज R is the radius or A is the radius. What will be the potential if Q is the charge on it? Then potential will be V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Equation number first. This is the potential on the conductor. Okay. What about capacitance? Electrical capacitance. Electrical capacitance C is equal to Q by V. Q upon 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. And when you will solve it, then you will get 4 pi epsilon naught R. So this is the formula of electric capacitance of a conductor, in which C is directly proportional to R. मीन जितना बड़ा कंडक्टर होगा जितना रेडियस ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस भी उतनी ज्यादा होगी. इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर और साइज ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टर का साइज हमें बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है. और यहां से अगर हम वॉल्यूम लें तो हम जानते हैं कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब. R is proportional to V to the power 1/3 और C is proportional to V raised to the power 1/3. यानी कि वॉल्यूम को अगर हम 27 टाइम्स करेंगे तो कैपेसिटेंस 3 टाइम्स होगी. वॉल्यूम को अगर हम 8 टाइम्स करेंगे देन कैपेसिटेंस विल बिकम 2 टाइम्स, डबल हो जाएगी. तो अगर कैपेसिटेंस को डबल करना चाहते हैं द V should be increased. This V stands for volume, this V stands for volume, and this V stands for potential difference, potential of the conductor. So this is the formula in terms of R and in terms of potential. Okay, let's take an example of earth. चलिए अर्थ का एग्जांपल लेके देखते हैं. Earth is a huge conductor of very large size, and as we know the radius of earth is 6400 kilometer. If you will convert it into meter, that is 10 to the power 6 meter. अर्थ का इतना बड़ा रेडियस होता है. हम अब क्या कर रहे हैं? अर्थ का कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं. पहले हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया, इसका फॉर्मूला बनाया, उसके बाद में हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला बनाया. अर्थ को हम स्फीयर एज्यूम करते हैं, अर्थ की कैपेसिटेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे. एंड C is equal to 4 pi epsilon naught R, and 4 pi epsilon naught is 1/9 into 10 की पावर 9. तो 1/4 pi epsilon naught कितना होता है? 9 into 10 की पावर 9, 6.4 into 10 की पावर 6, and it comes out 711 into 10 की पावर -6 farad, and it is 700 microfarad.
When we'll solve it, then we get it 711 microfarad, mean the capacitance of the earth. It is a huge size of conductor, very big, large size of the conductor. Its capacitance is only 711 microfarad, which is very much less than 1 farad. So what does it indicate? हमने बताया कि 1 फेरेड वो कैपेसिटेंस है जिसकी एसआई यूनिट है कैपेसिटेंस की, और अर्थ इतने बड़े साइज का कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफेरेड आ जाएगी. इट मींस 1 फेरेड इज अ वेरी लार्ज यूनिट. फेरेड इज वेरी वेरी लार्ज यूनिट. अगर अर्थ जैसे बड़े कंडक्टर का साइज के भी कैपेसिटेंस 1 फेरेड नहीं है, इट इज वेरी मच लेस देन 1 फेरेड. इट इज 711 माइक्रोफेरेड. सपोज आई आस्क वन क्वेश्चन. Can you have a conductor of 1 farad which is kept in your pocket, in your almirah, in your room, in your house? No. The 1 farad capacitance is such a big value, then the size of the conductor will be very large as compared to the size of earth, and we can calculate it. अगर हम C की वैल्यू 1 रख दें तो देखिए, चलिए इसका लगाते देखते हैं. अगर यहीं से हम क्या करते हैं, अगर 1 फेरेड का कितना साइज हो सकता है, लेट्स ट्राई टू एस्टिमेट इट. साइज ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 फेरेड कैपेसिटेंस. 1 फेरेड कैपेसिटेंस C is equal to 4 pi epsilon naught R. Okay, and R is equal to C upon 4 pi epsilon naught. What is 1 upon 4 pi epsilon naught? 9 into 10 की power 9, and C is 1. So R is 9 into 10 की power 9 meter. So this is the radius of the conductor whose capacitance will be 1 farad. 9 into 10 की power 9, and we know the radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 6. So approximate 10 to the power 3 times, or more than 10 to the power 3 times the size of the earth. If we take such a huge conductor, then its capacitance will become 1 farad. So this is all about the electrical capacitance. What is the meaning of the electrical capacitance, and what is the formula of electrical capacitance of a conductor? For a spherical conductor, we have this formula. General formula is C is equal to Q upon V for any conductor, and then this is the example of the capacitance of earth, and we have tried to estimate the size of a conductor whose capacitance is 1 farad. Okay, so let's stop it, and we'll start next topic in the next lecture.